Yes, welcome to the class, students. How are you all? कैसे हो सभी लोग? So, as you can see, आप देख रहे हो क्या लिखा है? यहाँ लिखा है matter in our surroundings. So, yes, we are going to discuss or we are going to start with this chapter from the class 9th. Yes, that is your chapter number 1, जिसका नाम है matter in our surrounding, है ना? हम ये chapter काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. We will discuss each and every concept of the chapter in detail one by one, है ना? थोड़े थोड़ी देर में छोटी छोटी क्लासेस में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, कम ऑन स्टार्ट विद द क्लास. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ, यदि मैं पूछूं आपको, तो इट इज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ मैटर. Yes, because we are starting with matter in our surrounding. So the first question that will be there, it is, what is a matter? Yeah. So what comes in your mind? Matter क्या है? हम तो बोलते हैं ना मैटर हो गया. That is not the matter. Yes, matter, if I am talking about the chemistry, so matter is anything, students, which occupies space and it has mass. Yes, so anything which occupies space and has mass, that is a matter. यानी ऐसी कोई भी चीज जिसको स्पेस लगती है, जिसको जगह लगती है और उसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वेट है, वजन है, कितनी भी छोटी से छोटी चीज रहेगी. या बट यदि इफ इट इज टेकिंग सम स्पेस, a very minute space also, if it is having a very minute weight also or mass also, है ना, then it will be called as a matter. So in that way you can say that, ma'am, everything is there which is matter. Yeah, if I talk about this pen, yes, the pen is matter. If I talk about the screen, my fingers, everything, the room I am sitting, the book, the pen, the bag you have, the table, chair, all this thing a matter? Yeah, because they all occupy space and they all are having mass. Even students, I will say, a small drop of water, यदि एक आप पानी का एक छोटा सा ड्रॉप भी लोगे, तो उसमें आपको पता है देर विल बी सो मेनी डिफरेंट पार्टिकल्स, सो मेनी पार्टिकल्स विल बी देयर. यस, सो ऑल दिस कंस्टिट्यूट, क्या बोलेंगे, कि दे ऑल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. सो एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर, okay, that anything which occupies space and it is having a mass, it is a matter. Got it? So for example, we can write it down. Here we can write the example as, if we want, which color we will take? Okay, come on, we will take it red only. Chalo. So the food, any type of food, if I am talking, yeah, so food, then water, isn't it? Air, table, chair. What we are using? Our clothes, है ना? Clothes or the gases, trees, then rocks. Rocks तो living thing नहीं है ना, it is a non-living thing, but yes, it is occupying the space and it is having a mass. So these all are the, or they all are called as a matter. इन सभी को matter बोलेंगे. अब एक बात बताओ, यदि मैं बोलती हूँ कि अफेक्शन या फिर टेस्ट, क्या ये भी मैटर है? इज दिस ऑल्सो मैटर? If I say, for an example, if I take you the word taste, yeah, that it is very sweet in taste, it is very sour in taste. So is it a matter? Can you say that it will be a matter? Or if I talk about friendship, yeah, we have a very so many friends, but I'm not talking about friend, but I'm talking about a friendship. Students, such, if I'm talking about friendship, if I'm talking about taste, ये सारी चीजें, या फिर if I'm talking about smell also, या affection, ये सारी चीजें क्या है? They are not matter. Remember, if the question is there, they are not matter. क्यों नहीं है ये matter?
क्योंकि क्या टेस्ट को कोई मास होता है, कोई वजन होता है टेस्ट का, या नहीं होता है? ये स्मेल, इज इट हैविंग एनी मास देयर? It is just what? Or friendship, is it having any mass? Is it having any space? These all are the feelings, these all are the emotions, these all are the simple things, but yes, they don't have any space, they don't have mass. So they are not a matter, I hope. But one more important thing, if I talk about the smell also, na, देखो सिर्फ smell बोला, so it is not a matter. But if I am saying the smell of a particular thing, किसी चीज की smell बोल रही हूँ, isn't it? So वहां पर आ जाएगा आपका रोल मैटर का, क्योंकि वो किसी चीज की स्मेल है. If I am talking about a smell of a, I can say a perfume, है ना? तो परफ्यूम क्या है? परफ्यूम तो एक तरह का गैस रहेगा, तो गैस की स्मेल, तो दैट विल बी नाउ अ मैटर, उसको हम वहां पर मैटर गिनेंगे. सो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना है कि क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम, दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चन इन एन एमसीक्यूज. सो यू हैव टू थिंक, yeah, you have to read the question carefully, you have to understand the question, and then you can give the answer, isn't it, students? Come on. So now I think this is very much clear that what is matter and what is not matter, है ना? जो किसको हम matter बोलेंगे, किसको हम matter नहीं बोलेंगे. I hope this is very much clear. Okay, चलो. So the next thing that I'll tell you that previously, है ना, बहुत पहले जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनके हिसाब से जितने भी मैटर्स है, मैटर्स को तभी पदार्थ बोला जाता था. यस, व्हाट दे यूज्ड टू से, दे यूज्ड टू से इट एज अ पदार्थ. या सो दैट पदार्थ और द मैटर, they were made up of 5 basic things. Yes, that 5 basic things, they called them as a panch tattva. यस, उसको क्या बोलते थे? पंच तत्व. तत्व यानी चीजें, और पंच यानी 5. 5 चीजों से आपके पदार्थ बने हैं. सो विच वे द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम? दिस इज अकॉर्डिंग टू दवर एंशियंट philosophers, isn't it? So what are they? Can anyone give me the answer? Think about it. Pancha tattva, yes, it is air, water, sky, fire and earth, है ना? वायु, पानी या फिर जल, देन स्काई यानी आसमान और आकाश, फायर अग्नि, अर्थ यानी पृथ्वी. यस, ये 4 है पंच तत्व अकॉर्डिंग टू द एंशियंट फिलोसोफर्स देयर. यस, एंड दीज ऑल आर व्हाट? दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ दिस 5 थिंग्स. क्या? एंड मैटर को क्या बोलते थे उस समय में? पदार्थ बोलते थे. लेकिन अब इन द मॉडर्न डे, यस, साइंटिस्ट ने अब मैटर को क्लासिफाई किया है 2 डिवीजन में. दैट मीन्स इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज. यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में भी मैटर को डिवाइड किया गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में. तो ये चैप्टर में हमको मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. Yeah, so on the basis of physical properties, students, the metals are divided. Yes, or there are 3 types of matter, or 3 that means solid, liquid and gas. आपको पता है ना? Solid, liquid and gas. ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे. यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करेंगे तो मैटर को डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. ये चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना. सो दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 3, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो द एग्जांपल ऑफ सॉलिड एज अ मैटर, कोई एग्जांपल हम दे सकते हैं? कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं एज अ सॉलिड? We can take it, there are so many examples, and a chalk, yes, you can take as a table. Yeah, so these all are the solid matter. If I'm talking about liquid, liquid सबसे common water, water बोल देंगे हम लोग, है ना? or any side of the liquid like lime juice or any type of juice.
isn't it? So these are the liquid. Then what about the gas? Gases यानी कोई भी प्रकार के जो gases है, oxygen gas is there, है ना? Carbon dioxide gas is there, nitrogen gas is there, the gas inside the balloon which is there, है ना? So there are so many different gases are present. So they will be in the as a gases, as a matter there. Okay. So three states of matter it will be there: solid, liquid, gas, on the basis of the physical property. I hope this is clear. Now next we are going to discuss. आज हम देखेंगे कि physical nature of matter क्या होता है. Yes, what is the physical nature of matter? मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, या फिर उसका मतलब है कि मैटर किससे बना है. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. हमने देख लिया मैटर क्या है. यस, हमने देख लिया कि कितना थ्री टाइप्स ऑफ मैटर कौन कौन से हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. लेकिन मैटर किस चीज से बना है, क्या है ये. सो देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर फॉर दैट, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट the matter is made up of particles, and that too tiny particles, very small particles, इतने छोटे कि that they are not also visible with our naked eyes. बहुत बार तो हम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, isn't it? जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, यदि हम पानी का एक ड्रॉप लेते हैं, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, या फिर जब बारिश आती है तो रेन ड्रॉप आप इमेजिन करो. यस, इफ यू सी द रेन ड्रॉप, in that raindrop, you know how many particles of water are there? Can you, do anyone of you know this? That a small drop, yes, a small drop of water, yes, small drop of water or rain, it contains, students, 10 to the power 21 particles of water. Yes, in it. इसके अंदर एक पानी के छोटे से ड्रॉप में 10 to the power 21 particles of water रहेगा. तो समझ, 10 to the power 21 यानी 10 into 10 into 10 into 10 into जो 21 बार हम करेंगे उसको, और उसका जो आंसर आएगा, that much particles will be there in a small drop of water. So now you can imagine that how small or how tiny are the particles of water. इसी से समझ में आता है कि वाटर किसी भी मैटर का पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, है ना, how small they are. I hope this is clear. Now, one more question comes in my mind, that how we can know that the matter is made up of particle. Ma'am, you are saying that yes, matter is made up of particle. आप बता रहे हो कि matter छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन हम कैसे माने. Yes, how we can say or how we can think about that yes, matter is made up of particles. So for that, definitely students, we will see some of the facts. Yes, that means the evidence for the existence of particles in matter. कुछ evidence हम देखेंगे, ये जिससे हमको पता चले कि या matter is made up of particles. कुछ experiments रहेंगे on the basis of diffusion and Brownian motion. Yes, हम कुछ experiments देखेंगे on the basis of what? On the basis of diffusion and the Brownian motion. Now, which are the experiments that we are going to discuss? Yes, the first, that means dissolving salt or sugar in water, potential per magnet when it is dissolved in water, as well as movement of pollen grain in water. So students, if I talk about the first one, that is dissolving salt or sugar in water, ये तो बहुत कॉमन है, हम सब करते हैं. या पानी में यदि मैं कुछ सॉल्ट को डिसॉल्व कर लूं, या पानी में, चलो वी विल टेक दैट, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस? दिस इज अ ग्लास इन विच देयर इज वाटर, है ना. देखो, हाफ ग्लास ऑफ वाटर इज देयर, एंड इफ आई ऐड सपोज
Yes, a spoon of salt. This is a salt. Yes, if I am adding this salt, what is happening? Look, you can see here. Yes, yes, yes. I added the complete salt there. So what can you see here? क्या दिख रहा है अभी आपको? या ये सॉल्ट पहले तो यहाँ आ गया है, यहाँ पे जमा हो गया, कुछ कुछ तो डिसॉल्व हो गया ऑलरेडी, क्योंकि पानी का जो कलर था एकदम ट्रांसपेरेंट था। नाउ ये थोड़ा सा हेजी हो गया, इजंट इट? अब यदि मैं इसको थोड़ा सा स्टर करूंगी, अब देखो कुछ बाहर और दिख रहा है हिलते हुए। नाउ इफ आई स्टर दिस salt, can you say that now this salt has been totally mixed with water? देखो, yes, is it mixed? अब नीचे में salt नहीं दिख रहा है, ये पूरा salt आपका ये पानी में dissolve हो गया है। तो ये कैसे हुआ? How it has been done? Yes, how it is done? Anyone? Look, when salt और शुगर, सेम वे हम शुगर को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर वी कैन ऐड द लेमन ऑल्सो ना। लेमनेड जब बनाते हैं, व्हेन वी ऐड इट द लेमन इन अ वाटर, दैट इज द सेम थिंग। So what happens there when the salt is added to water and it is stirred? What do you observe? Was there any change in the water level? सबसे पहले देखो, वाटर लेवल में कुछ चेंज था क्या? वाटर लेवल में तो चेंज नहीं था, जितना वाटर था उतना ही वाटर था, isn't it? और उसके साथ साथ क्या वो डिसॉल्व हो गया था पूरी तरह से? यस, वो हो गया था डिसॉल्व पूरी तरह से। सो स्टूडेंट्स, बिकॉज salt and water both are made up of now tiny particles. Look, we can say here, I will show you in this case. If I am talking about this dissolving a solid in a liquid, in that case, if I am taking these two things, dissolving salt in water. Now this was water, as I told you. अब ये वाटर के सपोज ये सारे पार्टिकल्स है, यस, हमको तो नहीं दिख रहा है, वी कैन नॉट सी दिस पार्टिकल्स, दिस इज टू एक्सप्लेन यू, या दैट दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नाउ सॉल्ट वाज एडेड इन दिस वाटर, am I right? So this water, the particle starts to first go at the bottom, isn't it? ये salt के particles है। उसके बाद में आप जब हमने स्टर किया तो हमने देखा कि ये सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, है ना? दे हैव बीन मिक्स्ड विथ ईच अदर। क्यों मिक्स हो गए? बिकॉज दिस बोथ आर मेड अप ऑफ दिस मैटर, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, बोथ इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर पार्टिकल्स मिक्स्ड विथ ईच अदर। yes, their particles mixed with each other. I hope this is clear. या और मिक्स कैसे हुए? क्योंकि ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है, या दैट इज ऑल्सो वन थिंग। पार्टिकल्स जो दोनों मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है, ये जो वाटर का पार्टिकल है वो हो सकता है इस तरह से मूव कर रहे हैं, है ना? और जब हम सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट के पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद में वो भी मूव करना शुरू करेंगे। So they are also moving in this way. Water particles are also moving in this way, and there are some spaces in between the water particles, जो space के बीच में salt के particles जाके mix हो जाएंगे. That's why we cannot see now the salt. Salt पूरी तरह से dissolve हो गया. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? This is also called as your diffusion भी बोल सकते हैं, है ना? So water level तो सेम रह गया, isn't it? लेकिन जब हम उसको टेस्ट करेंगे, जब ये मैं पानी को, देखो ये तो बिल्कुल वाटर ही दिख रहा है ना। नाउ इफ आई विल टेस्ट दिस, इट विल नॉट टेस्ट लाइक अवर वाटर, पानी जैसा नहीं टेस्ट करेगा, ये सॉल्टी टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट ऐड हो गया है। यस, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट आर आल्सो देयर इन अ वाटर। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट, यस, इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। When 2 to 3 crystals, yes, ये ज्यादा नहीं, but yes, some crystals of potassium permanganate, yes, crystals भी कितने, 2 से 3 crystals यदि हम लेते हैं, 2 to 3 crystals of this potassium permanganate, जो कि students ये पर्पल कलर का रहता है ना? You can see here,
ये पर्पल कलर का रहता है व्हेन दिस इज डिसॉल्व इन सम वाटर। वाटर तो कलरलेस रहेगा, है ना। हम क्या देखते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द बीकर इन विच इट इज एडेड देयर इट हैज चेंज टू पर्पल कलर। ये पर्पल कलर हो जाएगा। देखो वाटर है, वाटर कलरलेस था। ये फिगर में मैंने आपको ब्लू कलर इसीलिए दिखाया है जस्ट टू think that it is a particles of water. Okay, we know that water is a colorless. Then when we add this potassium permanganate, the color becomes a purple color. Why the color change? जादू हो गया है ना। क्यों हो गया ये जादू? Because the same thing, क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट कुछ पार्टिकल से बना हुआ है और जब मैं उसको इसको मैं ऐड कर रही हूँ वाटर में, वाटर के भी पार्टिकल्स है, तो वाटर के पार्टिकल्स के साथ में पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स भी मिक्स हो गए और जब वो डिसॉल्व हो गए तो उसका कलर क्या हो गया, क्योंकि वाटर तो कलरलेस था तो कलर किसका दिखेगा, अभी पोटेशियम परमैग्नेट का कलर दिखेगा, दैट इज अ पर्पल कलर. So the solution becomes in as a purple color solution. Got it, students? So this is what we can say, that this is seen when we dissolve a liquid in a solid in a liquid. Yes. So these two experiments that we have seen, ये दो experiments जो हमने अभी समझे, इसके हिसाब से क्या दिख रहा है? Yes, it shows that the particles of a solid, it gets separated. सॉलिड के पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे कब? व्हेन एडेड इन अ वाटर. जैसे जब सॉल्ट को हमने ऐड किया या शुगर को ऐड किया या क्रिस्टल पोटेशियम परमैग्नेट को क्रिस्टल को ऐड किया, ये सारे सॉलिड्स हैं. इसके पार्टिकल्स सेपरेट हो गए जब वो वाटर में ऐड किए गए और सेपरेट होने के बाद में वो डिसॉल्व हो गए वाटर के साथ में. या कैसे डिसॉल्व हुए? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन. यस. सो व्हाट इज डिफ्यूजन? एनीवन? डिफ्यूजन इन्हें हम क्या बोलेंगे? यस, वी कैन से दैट डिफ्यूजन, दैट मीन्स इट इज इंटरमिक्सिंग. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन, अपने आप, is nothing but it is diffusion. Yes, intermixing of particles by their own, it is called as a diffusion. So this is due to the diffusion that the particles of a solid have been now dissolved in a liquid. So इससे हम बोल सकते हैं कि yes, matter, it is made up of tiny particles. बोल सकते हैं? Okay, चलो, ये तो हो गया डिफ्यूजन का. एक और चीज हम बताएंगे, ब्राउनियन मोशन के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स दैट द मैटर और द मैटर इज हैविंग स्मॉल पार्टिकल्स देयर. यस. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. ये कंसेप्ट दिया था किसने स्टूडेंट्स? द ब्राउनियन मोशन कंसेप्ट, इट वाज गिवन किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन. यस. concept was given by Robert Brown when it was given in 1827. You can note it down, आप लिख सकते हो. Yes. So हम ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था, उन्होंने समझाया था पोलन ग्रेन्स के हिसाब, पोलन ग्रेन्स को लेके. यस. सो द ब्राउनियन मोशन क्या है? द ब्राउनियन मोशन आप देख सकते हो फिगर, उससे आपको समझ में आएगा. यू कैन सी दिस. यस. सो व्हाट कैन यू सी हियर? ये जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं? ये पैटर्न जो हम ऐसे पैटर्न बोलते हैं, कभी भी जो भी जाता है, व्हाट वी कॉल्ड इट एज? वी कॉल्ड इट एज अ zigzag, है ना. So the Brownian motion is nothing but it is a zigzag movement, yes, of a small particles suspended in a liquid or in a gas. Yes, कभी भी किसी पार्टिकल को यदि हम लिक्विड या गैस में ऐड करते हैं किसी भी मैटर को और उसके पार्टिकल्स सब zigzag वे में मूव करने लगते हैं,
यस, हम उसको बोलते हैं, वो मोशन को हम बोलते हैं इट इज अ ब्राउनियन मोशन. सो इफ यू वांट वी कैन राइट इट डाउन. व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? Yes, it is zigzag movement of small particles suspended in a liquid और इन अ गैस. यानी लिक्विड में भी ब्राउनियन मोशन दिखता है और गैसेस में भी दिखा जाता है. यस, so it is in a gas or it is in a liquid. I hope this is clear, students. So now रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स, वी नो पोलन ग्रेन्स, आपको पता है पोलन, यस, फ्लावर्स में रहते हैं, द पोलन ग्रेन्स. सो ही हैज टेकन द पोलन ग्रेन्स एंड ही हैज सस्पेंडेड दैट पोलन ग्रेन्स इन वाटर. वाटर में डाल दिए थे. व्हाट ही ऑब्जर्व, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में बाद में वो पार्ट को देखा तो उन्होंने देखा कि जो पोलन वाटर के ऊपर डाल दिए गए थे वो इस तरह से मूव हो रहे थे. यस, इस तरह से वो मूव हो रहे थे. दिस इज इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर. वाटर पार्टिकल्स नहीं दिख रहे. यस, ये माइक्रोस्कोप में जब देखने के बाद हमको ऐसा दिखा गया था, लेकिन पोलन के पार्टिकल्स इस तरह से मूव होते हुए दिख रहे थे. So that means it is moving in a zigzag manner. क्यों मूव कर रहे थे? Why it was moving? So this was the observation. Now why we say that? Why, how we can say that it is a particles? है ना? ये किस तरह से एक्सप्लेन किया गया था? Like we know that the water it will be there. That water का हो सकता है water particles से बने हुए, tiny particles से बने हुए, जो कि मूव कर रहे हैं, हमको नहीं दिख रहे. We cannot see that. They are moving very fast. Yes, when to these particles the pollens are added. Yes, pollen grains जब ऐड किए थे और वो उसके सरफेस में थे, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स थे ना वो खुद मूव कर रहे हैं. तो ये जो पोलन के पार्टिकल्स बीच बीच में आ रहे हैं वो उसको पुश कर रहे हैं. कभी कोई पार्टिकल यहाँ से पुश कर रहा है, कोई वाटर का पार्टिकल यहाँ से पुश कर रहा है, कोई वाटर का पार्टिकल यहाँ से पुश कर रहा है. सो दे आर पुशिंग the particles of the pollen grain also. And that's why, because of that fast moving particles of water, the pollen particles are moving in a zigzag manner. Yes, and they are showing the Brownian motion. I hope this is clear. समझ में आया? इस तरह से हम ये प्रूफ होता है, हम बोल सकते हैं कि यस, कोई भी मैटर पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से बना है. और दूसरी चीज क्या प्रूव हो रही है यहाँ पे ब्राउनियन मोशन के थ्रू? कि पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव भी करता है. डिफ्यूजन से भी हम मूवमेंट बता सकते हैं, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट अ वाटर देयर, इफ द वाटर, टू दिस वाटर इफ समथिंग इज एडेड, यस, सो दिस थिंग इट विल गो, ये मूव करेगा नीचे नीचे और वाटर के पार्टिकल्स मूव करेंगे ऊपर ऊपर. तभी तो ये जो चीज है जब ये मूव करेगा तभी तो ये मिक्स हो जाएगा ना. यदि वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे तो जो भी हमने ऐड किया है ज्यादा से ज्यादा वो नीचे जाके बैठ जाएगा. yes, but it is mixing. That means the particles are in a motion, they are moving. I hope this is clear. So students, this is what is your Brownian motion. Yes, how the Brownian motion, this proves that the particles are in a motion also, they are moving also. Yeah, so we can say that the Brownian motion gives the conclusion that matter is made up of tiny particles. Okay, ये चीज तो पता पड़ गई कि tiny particles, इसके साथ साथ and the particles are constantly moving.
ये जो टाइनी पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव भी कर रहे हैं. Yes, this is proved by the Brownian motion, and the same thing we can also prove by the diffusion also. Yes, so I can add diffusion also. Isn't it? एक और एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया ब्राउनियन मोशन का. बहुत बहुत at present I don't have the torch or like that. If you have seen sometime, जब सूरज की किरण किसी छेद में से या विंडो में से आती है. Yes, when you have seen a beam of light when it enters in a room, तो रूम में जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वो लाइट जो जो प्रकाश आता है उसमें आप देखोगे कि आपको डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए दिखते हैं, है ना. वी सी सो मेनी डस्ट पार्टिकल्स. So how this is seen, or what is it? Because when the light falls, students, we see that these particles, they would be suspended in air. वो जो हवा है, yes, हवा हमारे चारों बाजू है हमेशा. Yes, just a minute. This is not a salt water, okay? So we know that in the air this particle must be suspended. वो घूमते रहते हैं. हवा, air is a gas. The dust particles, they are the particles of dust. Yes, so they are mixed with each other. And वो हमको कब दिखता है? जब उसके ऊपर सूरज की किरण, when the beam of sunlight falls on that, so we can see that the dust particles are moving randomly in the air, which is suspended in the air. Isn't it? So ये भी एक एग्जाम्पल है ब्राउनियन मोशन का. वो भी क्यों सस्पेंड हो रहे, वो क्यों ऐसे ऐसे यहाँ से वहां घूम रहे डस्ट पार्टिकल? क्योंकि the particles of air, they are moving and they are pushing the particles of dust, and that's why they are moving in an irregular way or randomly. I hope this is clear. So we can say that, students, the process of diffusion and the process of Brownian motion, yes, it tells us two things. It proves two things, that the matter is made up of tiny particles, and the particles of the matter, they are continuously moving. ये दो चीज प्रूव हो गई. यस, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई. तो हमने अभी क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है. यस, मैटर ऐसी कोई भी चीज जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है, हम उसको मैटर बोलते हैं, है ना. फिजिकली मैटर हम डिवाइड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एज द सॉलिड, लिक्विड और गैस. Isn't it? मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है. ये हमने कैसे प्रूफ करके देखा? हमने दो कंसेप्ट लिए, एक लिया डिफ्यूजन और दूसरा लिया ब्राउनियन मोशन. ये दोनों कंसेप्ट के बेसिस पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया कि यस, the matter is made up of tiny particles and the particles of the matter are constantly moving, है ना. So आज हम यहीं पर रुकेंगे. We will stop here only. In the next class we will discuss the characteristics of matter. Matter के characteristics क्या है? Isn't it? After that we will go with the state of matter. जैसे कि मैंने बताया, हम छोटे छोटे क्लासेस में एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So be there, students. And yes, if you like the class, this is the class from the Arth Academy, है ना. So thank you for the attending the class. जब तक हम दूसरी क्लास लेकर आते हैं, तब तक आज हमने जो पढ़ा वो कंसेप्ट आप फिर से पढ़ोगे. You will revise the thing and keep learning till then, and all the very best for your study, students, till we meet in the next class. And yes, if you want more such classes and more such courses, yes, आप अर्थ एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. आप डिस्क्रिप्शन से भी उसकी लिंक उठा सकते. यू कैन टेक द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, और आई एम ऑल्सो शेयरिंग दिस लिंक. Through this link you can download our app, that is Arth Academy app, students, in which you will get all the videos of the classes, as well as with that you will also get the study materials.
You will get some question answers, some extra questions and everything related. जो भी आपको सारी important चीजें आपके studies की related रहेगी, everything you will get. And yes, you can also connect directly to the app with me. And if anything you want, you can give the comment here also. Okay. So till then, all of you, bye bye, take care and keep learning. Yes, bye students.